It's being seen as a massive breakthrough. A terrorist from Pakistan caught alive hours after he and another terrorist opened fire on a BSF convoy in Udhampur, killing 2 Jawans. The captured terrorist is the first big catch after 26/11 Mumbai attacker Ajmal Kasab. He has told interrogators he's from Faisalabad in Pakistan. In his statement made on camera and in his responses during interrogation, the terrorist has identified himself variously as Qasim, Usman and finally Naved. जंगल से आए थोड़ी आया तो पाकिस्तान से कब का निकला है पाकिस्तान से? कितने दिन हो गए? 12 दिन। 12 दिन हो गए। कितने बंदे थे? दो ही थे। नहीं असली बात था कितने थे? जो छोटे छोटे बच्चे मारे यार उनका क्या कसूर था? वो क्या करते हैं आप क्या दुश्मनी है हमारे से हिंदुस्तान से? लोगों से आपको क्या दुश्मनी है? पैसे मिलते हैं आपको? पे मिलती है, सैलरी मिलती है तो क्यों जा रहा अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो आप? अच्छा काम करने से मजा है। अच्छा काम करो, दिहाड़ी लगाओ, दिहाड़ी लगाओ। दिहाड़ी क्या लगाए? मारना ही मारना है। क्या इधर बैठा बोली जाए जी? हमने क्यों मारना है यार? वो बंदा बैठा है जो फुटे पते साथ रहा वो बंदा लेगा। वो दो बंदे हाँ बैठ जाए यार। हम ऐसे बात पूछ रहे हैं यार। हम भी जा रहे हैं। अभी आ रहा है डीएसपी साहब को पहुंचना था, मैं बताता हूँ। पाकिस्तान से दो नहीं है, एक तो बात है ना। कितने बंदे ने बोला उसने? यही बैठा हूँ तुम्हारे सामने। और बस 2 ही बंदे थे आप? ट्रेन पे आए या बस पे आए? ना कौन सी ट्रेन बस आती? जंगल से आए? अगर ट्रेन बस आती होती तो इधर ही आ जाते। इधर कैसे पहुँचे आप? इधर जंगल। अभी आपने कितने बंदों ने घुसपैठ की है? वाटर कहाँ से पार किया आपने? इतना बड़ा डील कैसे है? वाटर वाटर कैसे पार किया है? हाँ मेरे को आदमी है बहुत सामने बहुत बैठे हुए पूरे नहीं। ऐसे खाना पीना कौन देता है आपको जब आपको इतनी देर लगती है? कौन है आपको खाना पीना क्या है? घर में सुबह का खिला लेते हैं, ऐसे आपको पनाह देते हैं लोग? इधर देखो वो तो 3-4 आई देखिए गल कराओ। इतने दिन से कहाँ रुका? मैं तो नहीं कहीं, पाकिस्तान से अभी आए थे आप बॉर्डर से। ना 2 दिन हो गए। फिर हम नीचे उधर सड़क पे जम्मू, फिर उधर से गाड़ी एक पकड़ी है। नहीं तार काट के आए भाई आप? तार काट के आए? आपको पता होता उधर आर्मी शार्मी नहीं थी तार के पास? हाँ तार के पास कोई आर्मी शार्मी नहीं थी उधर? जैसे पोस्टें थी उनकी ना, तार नहीं काटे। हमारे पास क्या था जो तार काटे? ऐसे ही आपको तार शार कुछ नहीं काटी आपने? नहीं आपका भैया आगे का प्लान क्या था? क्या करना था आपने? आगे का क्या प्लान था? आपने कहा हमला करना? 15 अगस्त के ऊपर अभी पकड़ा गया हूँ, आगे क्या करना? देखो अभी नहीं यार हो गया। आप पकड़ा तो क्या करना था आगे? नहीं कहाँ श्रीनगर जाना था आपने? ना उधर क्या, इधर हमें कोई पता नहीं क्या इलाका है, कौन सा नहीं जी हमें अभी 1 घंटा लगेगा। ठीक है Well, in that video, Naved seems unperturbed. You see him smiling, apparently enjoying his moment in the limelight. But there are also many contradictions in his narrative. But what we do know is that 2 militants attacked the BSF convoy near Samruli, about 10 kilometers from Udhampur town. They allegedly stopped a bus in which BSF soldiers were travelling and started firing, killing 2 Jawans. The BSF returned fire, killing one of them, now identified as Momin. The second terrorist, identified as Naved, ran into a village with security forces hot on his trail. He first ran into a school, which was fortunately shut because of planned protests there. He then took 3 villagers hostage and fled into a densely forested area. When security forces got close, Naved apparently tried to escape. That's when one of the hostages grabbed his neck, the other grabbing his gun, overpowering him till the police arrived. इसने बोला कि मेरे को रास्ता बताओ, मैंने फरार होना यहाँ से। चलते चलते जब रास्ते में बैठे थे हम,
बैठते बैठते ऊपर चल के 4 किलोमीटर पर वो तो इसको खाना खिलाया, इसको भूख लग रही थी, इसको खाना खिलाया हमने। कोई काम पे जा रहा था, उसके बाद रोटी थी होटल से, खाना खिलाया इसको। बाद में इसने एक साइड में हो गया, मगर इधर कोई डर नहीं है, हमने इसको पकड़ना था, किसी हाथ में पकड़ना था इसको, एक हाथ में एक साइड हो गए, पकड़े इसको, तो तब तक ऊपर से पुलिस आ गई। इसने देखा पुलिस आ रही है, अब ये मेरा बचना मुश्किल है, इसने हमारे पे टॉर्चर करनी शुरू कर दिया। लेकिन हिम्मत इनकी थी, इसने उनकी गर्दन दबाई और मैंने उसकी गन पकड़ी। उसने इतना बोला, गन पकड़े बड़ा कुछ इसने बोला कि मेरे को छोड़ दो, मैं भाग जाता हूँ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, माँ मुक्के मारे। Nazir Masoodi joining us live from close to Udhampur at this point. Nazir, what is it that forces are now saying? Several contradictions in the various accounts that Naved has now given, one on camera, the other to his interrogators. What more do we know at this stage? Well, this terrorist who has been captured by the civilians, first of all, when he talked to people, so many people were around, and he spoke in front of camera, and many people were asking him many questions and he couldn't answer. So they were not professional interrogators to ask him the relevant questions to answer, but he was saying he's coming here to take some revenge. But what is more important, this militant, he along with his colleague have been here for last 12 days. They have infiltrated 12 days ago. Why they were staying, who was behind this group, who has brought them to this place, was this the target or it was just a random target? All these questions will be answered once the formal interrogation of this militant has already started, and once the professional interrogators, they will file this investigation report, and then all the things will be clear. But so far what we know is he's from Faisalabad, the area which has the great influence of Jaish-e-Mohammed chief Maulana Masood Azhar, while the police say this is a typical Lashkar-e-Taiba attack, but they are also not ruling out his links with the Jaish-e-Mohammed militant group. If he is from the Jaish-e-Mohammed, that means Jaish-e-Mohammed is again reviving its activities in Jammu and Kashmir. Then more important thing is that now the Jammu has become the target of militancy since last 5-6 months. Since in the valley we have homegrown militants, large number of boys, young boys, educated from well-off families are joining militancy. There's no, militant, nobody, no local is joining militancy in Jammu. So they are sending militants from across, carrying out these sensational attacks. And this is the first major attack along the Srinagar-Jammu highway in this stretch in last 15 years. That is the big thing. Their focus is back on Jammu and along the Srinagar-Jammu highway. We can see here at the highway, large enough, there's a deployment of the security force. You can see the bulletproof bunker vehicles have been deployed along this highway. On these dense forest areas, large number of security force have been deployed to prevent any such incident. Because police have no idea so far how many people these people have actually infiltrated when this guy Usman from Faisalabad has infiltrated. How many others were there? He has not given any clear answer to that question. Right. So it is really a matter of time and the matter of investigation to know all the aspects of this attack, and what is behind this attack, and what was their real target, and how many more militants are in this area who may have infiltrated along with Usman and other militant who was killed.